Now we have seen the igneous, sedimentary and metamorphic rocks, how they are formed and what are the examples. Then we are going to see the volcanic landforms are divided into extrusive and intrusive. Plutonic, then you have igneous and the igneous classification. Then we will see what are the factors which influence the soil formation. Parent material, relief, climate, natural vegetation and time. Then we'll see the rock systems. We'll see the rock systems, that is Archean, Kadpa, Carboniferous, Gondwana, Deccan basalts or tertiary or Mesozoic sedimentary. Okay. Then the Archean system, Precambrian. Then if you see that examples, increasing metamorphism. What is the metamorphism? Change in form. Change in form. Form. तो सबसे पहले कैसा है? Shell. Plain है. शेल से क्या कन्वर्ट हो रहा? शेल से क्या बन रहा? स्लेट. स्लेट से फिलाइट. फिलाइट से शिस्ट. शिस्ट से नीस. So this is the example of metamorphism. Then you have foliated rocks. Examples of the foliated rocks. Then you have in detail कब बना ये, what is the timeline. Then you have relief features. Then you have climate, natural vegetation, time, major soil types in India. मेजर सॉइल टाइप क्या है? एल्यूवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सैलाइनाइन, अल्कलाइन सॉइल्स. देन इंडिया में कौन सा सॉइल मिल रही है? अपने तेलंगाना में कौन सी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल. राइट. तेलंगाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है. ग्रीन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स. क्लियर है ये? छत्तीसगढ़. महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल है? महाराष्ट्र. ब्लैक सॉइल. Black soil. पूरा ब्लैक सॉइल. राजस्थान में एरिड. Arid. और इससे कम लैटेराइट सॉइल. Sir, arid कैसे रहती है soil? येलो. रेगिस्तान. Yellow. ठीक है. नेक्स्ट. Then you have what are the characters of alluvial soil. Then you have alluvial soil. खेती कैसी करते? जमीन बनाते पहले, खेती से पहले ये पूरा चलाया बाद में, हल चलाया बाद में. Then you have distribution, भंगर, relief features, भाबर, तेराई, भंगर. We have already seen this. भंगर, खादर. Then this is your black soil, black cotton soil. Then you have all these black soils, red soils. This is laterite soil. We have seen this laterite soil. कभी देखा इधर? महबूबनगर में कौन सी सॉइल है? Have you gone to महबूबनगर? कौन सी सॉइल दिखती? लाल सॉइल दिखती? कौन सी दिखती? लाल दिखती सर. लाल. तो लैटेराइट सॉइल्स. और लैटेराइट सॉइल से क्या बनाते हैं? क्या दिख रहा है आपको? ईंटा. ईंटे. ईंट बना रहे. ठीक है. And your crops in laterite soils, mountain soils अलग रहते. These are रेगिस्तान के जो soils है ना, ये desert soils. ये क्या है? These are the पानी कम रहने के बावजूद भी they can grow. These plants can grow. There can be vegetation. Then you have alien process and landforms कैसा बना? Examples है. Then you have marshy soils, peaty soils, चंबल ravines. ravine किसको बोलते हैं? खुरदुरी जो जमीन रहती ना, इसको बोलते हैं ravines. चंबल ravines. Soil erosion क्या है? फिर water erosion क्या है? Different types of erosions. Then you have badland, gorge and canyons. Erosion कौन से types के होते हैं? Then we'll see the ravines. We'll see the wind erosion. Then the affecting the soil erosion, soil conservation, rotation, cropping patterns. These are the cropping patterns. Buffer strip cropping बोलते हैं इसको. समझ में आ रहा है? Then contour strip cropping. Then you have cultivation and application of mulch in agriculture. माने पूरे ग्राउंड को क्या करते? उसको ढाप देते कचरे से.
क्या बोलते हैं, लकड़ियां जो भी बचे हुए रहती, सो दैट द टॉप सॉइल डजंट गेट लूज, एरोजन नहीं होना वही। देन यहाँ कंटूर बैरियर्स बनाते हैं, फार्मिंग है, रॉक डैम है, कंटूर फार्मिंग माने एक लेवल्स बना रहे। देन यू हैव कंटूर बंडिंग, शेल्टर, विंड ब्रेक्स, फॉरेस्टेशन चलता, फिर ओवर ग्रेजिंग, then we have all this. So understood what you are going to read? This is a very lengthy chapter, लेकिन एग्रीकल्चर समझना बोले तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।